everyone, a very good afternoon all of you. I am Himani Suri and I welcome you all to Gradeup IAS channel. So I hope you guys are doing great. We are here with the daily editorial analysis session. The date is 24th of November 2020. So let's get started with today's discussion and let's see which editorials we are going to discuss today, right? And before that, please do not forget to subscribe to our channel and also do not forget to like and share this video. Right, okay. So let's get started. The articles that we're going to discuss today, right on your screen. First article, banking health and K-curve dynamics. Right, this article basically talks about that how India's banking sector is going through a stress period, right? We have seen a domino effect. Ankur Bhati. Acha. We have seen a domino effect in terms of banks failing. Why? आपने देखा होगा, you might have heard about ILNFS crisis. ILNFS was one of the major non-banking finance company, NBFC, right? And it was under major stress and RBI took so many steps to revive it. Then you have seen Yes Bank issue. Then you have also seen recent Lakshmi Vilas Bank issue, right? So this tells us that these banks are going under a lot of stress, and somewhere or the other, so many experts talk about the fact that somewhere the banking sector of India is interconnected, that if one of the bank goes towards bankruptcy or failure, then it might have some interconnection with the other banks also. Okay, so this is one thing that we're going to discuss. Second article we're going to discuss is time for an Asian century. What this talks about? Ankur Bhati, in that regard, my team will be able to help you. I am not really answerable for that. ठीक है? तो आपको मेरी टीम इसके लिए हेल्प कर देगी, ठीक है? So time for an Asian century. कल भी हमने देखा, previously also we have seen that RCEP. We've discussed so many articles on RCEP now, and we've seen that due to signing of RCEP, Asia as a continent is emerging. ठीक है? Asia is emerging as a economic pole, I would say. It is emerging as a economic pole, right? So कैसे it can act as a balancing equation to balance the West, and how and why India should have joined RCEP. These are the things being talked about in this article. इसके author है मुकुंद सानवाल. ये basically यही बातें कर रहे हैं that why India should have joined RCEP, right? So let's see these two articles, starting with the very first. थोड़ा सा complicated लग सकता है आपको ये article. Talks about K-curve dynamics, talks about price to PB ratio, what we call price to book value ratio. So but we will see everything through the very basics, so don't worry and just have patience while going through this article. ठीक? Okay, recently with depositors in Lakshmi Vilas Bank, you know, LVB is being merged, amalgamated with Indian branch of DBS Bank. Indian branches DBS Bank of India Limited. Okay, so yes. So this is something we've already discussed. कल ही हमने discuss किया rather. Then what next? Writer says in this article that collapse of ILFS in 2018. Then Punjab and Maharashtra Cooperative Bank also was hit by a loan scam. Then that experience of Yes Bank and bailout for Yes Bank by RBI. So RBI is somehow trying to handle all these banks and all the failures these banks are going through. This is the reason why RBI acted very, very swiftly in case of LVB, and it decided to merge it with DBIL. क्यों ऐसा RBI ने decide किया? Because the swifter you act, the lesser the damage, right? That is why RBI is keeping a keen eye on banks which are especially under your prompt corrective action framework.
Okay, the PCA framework of RBI. ठीक है, so this is a little bit about the background. RBI bailout through a scheme backed by SBI and other banks. So these are things which are going on and which are the reality of Indian banks now. Now over here, writer talks about that how do we really measure the performance of financial companies. Neelima, good afternoon. How do we really measure the performance of financial companies? यानी कि जो financial companies हैं उनकी कैसी performance है, ठीक है, वो उनकी कितनी वैल्यू है, आगे वो प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि वो आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है. देयर इज अ मेट्रिक कॉल्ड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो. व्हाट? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो. एक ये रेशो होती है. इसमें बेसिकली इफ यू नो अबाउट शेयर्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट शेयर्स. शेयर्स पता है, बेसिक फंडा. शेयर्स दैट let's say if I buy the shares of Reliance company and I'm buying it at let's say 50 rupees per share. ठीक है, 50 rupees का एक शेयर मैं खरीद रही हूँ and it is going up to about 70 rupees. So when I will sell the share at 70, I will be earning 20 rupees. तो ऐसा शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है in the stock market. I'm giving one example. So this price fluctuations keep on happening in the shares. That means shares have something called as the base value and something called as the premium value or the face value. ठीक है, तो अब ये एक चीज हो गई. Now how it is related to your price to book value ratio? Let's understand what is price to book value ratio. Price to book value ratio compares the company's market value to its book value. अब book value क्या होता है? Market value तो हमें फिर भी समझ आ रहा है that market value is the value of the total shares. Okay, कि कितना एक शेयर कितने का है and into total number of shares. ठीक है, but what is book value? Now book value is the net assets of a company. See, it is written here very clearly that market value of a company is share price, one share price multiplied by number of outstanding shares, be it 100 shares, 1000 shares, 5000 shares, whatever. or book value is the net asset of a company. Net asset कैसे कह सकते हैं हम? जैसे कि यानी कि total assets माइनस टोटल लायबिलिटीज. ठीक, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. दैट इज योर एसेट्स आर टैंजिबल एसेट्स एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स. ठीक है, अब जैसे अगर हम बैंक की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, बैंक के पास कुछ टैंजिबल एसेट्स भी होंगे जो बैंक की अपनी प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग राइट. देन कुछ इनटैंजिबल एसेट्स भी होंगे. जैसे अब अगर आप लोन की बात करते हो, लोन इज एन एसेट फॉर बैंक राइट, बिकॉज बैंक इज अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन. ठीक है, तो अगर एडवांसेस बैंक देता है लोगों को तो उस पर इंटरेस्ट आता है, तो ये एक टाइप का एसेट हो गया. देन इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ इंटैंजिबल एसेट, कैन बी योर गुडविल. Goodwill is an intangible asset. How goodwill is intangible asset? If I give you example of SBI, so if I give you a choice that you would like to buy the share of SBI bank or you would like to buy the share of Lakshmi Vilas bank, of course you will like to buy the share of SBI bank if given a choice. So because of the goodwill of that bank, एक market image होती है हर company की, that we call the goodwill of the bank. Okay, that comes under intangible asset, right? So total assets minus total liabilities, जितना आपके पास total asset है जो आपका और उसमें से माइनस जितना पैसा आपको देना है liability, that can be आपने किसी को शायद पैसे वापस करने हो, ठीक है, आपने लोन ले रखा है किसी को वापस करना है, or whatever liabilities. Now in this, when we are calculating book value, we also subtract the depreciated value of the assets. Depreciated value यानी कि आज if today if I am buying an asset let's say of let's say 20 lakh का अगर मैं कोई asset buy कर रही हूँ, 5 years from now if the value when I go out to sell that asset, जैसे मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, तो अब जब मैं उसको बेचने जाऊंगी तो that probably will be for let's say 5 lakh, let's say 5 lakh or 8 lakhs. ठीक है, 8 लाख की कार होगी आफ्टर 5 years. तो जितने की मैंने खरीदी थी उतने की तो नहीं बिक रही. सो द लॉस और द डिफरेंस ऑफ 12 लाख है ना, व्हाट विल बी दैट विल बी द डेप्रिसिएशन. वो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं व्हेन वी आर फाइंडिंग द बुक वैल्यू. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज योर मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ वन शेयर, जैसे कि मैंने बोला रिलायंस का शेयर अगर 50 रुपीज का है, into total shares, total number of shares of Reliance. Okay,
सो बुक वैल्यू पर शेयर. अब पर शेयर क्या होता है? व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर? व्हेन बुक वैल्यू था आपका टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन डिनोमिनेटर यू हैव टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, अगर आपको पर शेयर बुक वैल्यू निकालनी है, राइट? तो दिस इज वन थिंग. इज P by B ratio clear? First of all, are you clear with P by B ratio? What is P by B ratio? That market price per share upon book value per share. If you're not clear, I can give you one example also. ठीक है, if I give you one example over here, जैसे कि if I say that I have a company, let's say I have this company ABC, okay? Yes. So if I have to find the book value and एक कंपनी की एसेट्स हैं, लगा लो टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़ के और लाइबिलिटीज हैं टोटल 75 करोड़ की. So what will be the book value? Book value will be for 25 crore. So book value per share. If let's say if this ABC company has 1 crore shares, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं. Okay, so 25 crore upon 1 crore. So book value per share will be 25 रुपए जो है आपकी बुक वैल्यू हो जाएगी पर शेयर. नाउ इफ आई गो आउट टू फाइंड आउट द P by B रेशो, ओके, मार्केट प्राइस पर शेयर, अलग जैसे 50 वाला एग्जांपल ही लेते हैं. मार्केट प्राइस पर शेयर का मार्केट प्राइस 50 है, बुक वैल्यू 25, तो आपकी P by B रेशो क्या हो जाएगी? इट विल बी 2. ओके, दैट इज द पॉजिटिव P by B रेशो. क्लियर? P by B रेशो क्लियर नाउ? वेरी सिंपल फंडा दैट वी अंडरस्टूड जस्ट नाउ, राइट? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज जितना आया दैट इज बुक वैल्यू. बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया. ओके, सो यू गेट द बुक वैल्यू पर शेयर. ओके, फाइन. नाउ फर्दर राइटर टॉक्स अबाउट दिस रेशो इन सो मेनी डिफरेंट वेज. आई मीन राइटर इज यूजिंग दिस रेशो टू अंडरस्टैंड थिंग्स फर्दर, टू मेक अंडरस्टैंड थिंग्स फर्दर. देखो, P by B रेशो जो है, प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशो above 1. When it is above 1, it indicates that market believes that company can grow and give return on equity. ठीक है, तो more than 1 की जो P by B रेशो है वो बताती है that ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा रिटर्न्स ला के देगी, स्पेशली जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अच्छा आएगा. ठीक है, तो दिस मीन्स मार्केट हैज अ ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसका P by रेशो पॉजिटिव है. ठीक है, whereas if P by रेशो is below 1, okay, if it is below 1 on the other hand, it indicates that the market either does not believe that the bank or that company या कंपनी या वो बैंक has recognized all its bad loans. तो अगर जैसे LVB जैसे बैंक्स हो गए या जो बैंक्स की NPA बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो दे आर लाइकली टू हैव P by B रेशो इक्वल टू और लेस देन 1. ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें हमने समझ ली. फाइन. नाउ further writer gives one argument that in India we have extremes. In India we have banks, some of the banks have P by B ratio more than 4 also, whereas some of them are having less than 1 or even 0.25. ठीक है, और even 0.25, यानी कि इतना वेरिएशन है in case of banks in India if we consider the P by B ratio, price by book value ratio. Rather for NBFCs the range is even higher. For NBFCs range is even higher. On the higher end some NBFCs have P by B ratio more than 7. ठीक है, तो अब आप ये रेंज देख रहे हो. यू कैन सी द वाइड गैप बिटवीन सम सक्सेसफुल बैंक्स एंड सम बैंक्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी. ठीक है, या NBFCs मूविंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी. अब इसी रेंज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सो इफ वी प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, so let's say two banks started at the same times almost along with same capital, but one bank बहुत ज़्यादा bad loans दे दिए, बिल्कुल पैसा वापस नहीं आया, बिना देखे loans दे दिए, whereas one bank was good enough and vigilant enough, followed all the rules and grew further. तो बैंक A, यानी कि कुछ बैंक जो A सेक्टर में आ जाते हैं और कुछ बैंक जो B कैटेगरी में आ जाते हैं, ये पूरा मिलके बनाता है आपका K कर्व. यू कैन सी दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ K. सो दिस फॉर्म्स अ K कर्व. द K कर्व, ये जो आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज हैं जिनके P by B ज़्यादा है, पॉजिटिव है P by B, और जिसका लेस देन 1 या 1 है. ठीक है, तो ये हो गया. तो दीज ट्रेजेक्टरीज डिपिक्ट इनइक्वालिटी.
ठीक है. द वाइडनिंग आर्म ऑफ द के, ये ए और बी क्या है, आर्म्स ऑफ द के, वुड इम्प्लाई दैट द इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग व्हाइल नैरोइंग द स्पैन ऑफ के वुड मीन द ऑपोजिट. यानी कि अब अगर हमें बढ़ता दिख रहा है ये ए और बी, के का अब ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज हो रहा है इस टाइम पे, स्पेशली आफ्टर कोरोना. नाउ दैट आफ्टर पोस्ट कोरोना पीरियड some industries are booming whereas some industries are moving towards crashing. तो के का बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मूव अप्लाई होता दिख रहा है, एंड वन इज योर दिस पी/बी रेशो एंड द फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक, तो ये हो गई. नाउ वाइडनिंग वेरिएशन, हियर फर्दर राइटर टॉक्स इन द सेम रिगार्ड दैट अ कपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव ऑलवेज हैड मोर देन 3 P/B रेशो, whereas some banks also have 1.5 for most period of time. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कोरोना के टाइम पे भी कुछ बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल्दो देयर रेशो इज लेस, बट दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, गिविंग लोन्स. ठीक, तो ये चीज हो गई. अब ये सब बता के राइटर क्या कहने जा रहे हैं, वाई इज ही टेलिंग एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. राइटर इज सेइंग दैट द बैंक्स विच आर परफॉर्मिंग गुड एंड ऑन द अपर एंड ऑफ द के कर्व, द बैंक्स विच आर ऑन द अपर एंड ऑफ द के कर्व, वी विल कॉल देम अल्फा बैंक्स because they are lucrative and good performing banks and they are expected to give good returns in future. Okay, having adequate access to capital, क्योंकि उनके पास capital की adequate access भी है और they have ability to grow. Okay, so these becomes alpha banks. So they need to transform themselves by those which are on the lower end, जिनका less than 1 P/B है. अब उनको उन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कितना RBI कितना रिवाइव करेगा जब तक बैंक इज नॉट एबल टू रिफॉर्म इटसेल्फ. द बैंक में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आते या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आते, आरबीआई आपको कितना बेल आउट करे या गवर्नमेंट आपको कितना हेल्प करे, राइट. इट इज द बैंक हु हैज टू मेक श्योर कि आप लोन्स किसको दे रहे हो और कितना आप वापस ला पा रहे हो, व्हाट इज योर एबिलिटी टू ग्रो. सो this is what is said that the other private sector banks which have lesser P/B ratio below 1 need to improve on what? 1, technology, add skilled manpower and improve मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस. इन 4 चीजों पे इन बैंक्स को काम करने की जरूरत है ताकि दे कैन लेसन द बर्डन ऑफ बैड एसेट्स और बैड लोन्स. ठीक है, तो ये हो गई. अब दिस थिंग अप्लाइज ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन प्राइवेट बैंक्स, इट अप्लाइज ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो. सो देयर इज अ नीड टू लेसन द गवर्नेंस प्रेशर ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बाय द गवर्नमेंट. देयर इज ऑल्सो सम पॉलिटिकल प्रेशर ऑल्सो ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच नीड्स टू बी रिलैक्स्ड और रिमूव्ड. सो राइटर सेज दैट PSU बैंक्स शुड बी फ्री टू अडॉप्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस टू ऑनबोर्ड लेटेस्ट टैलेंट टू फिल इन दी स्किल सेट गैप्स. ओके, तो PSU बैंक्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी to manage their operations, lesser obligations by the government end, तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है that RBI will reduce its surveillance. RBI को भी उतना ही नजर रखना पड़ेगा बैंक पे, because given the history of the public sector banks. Okay, so this is all being said in this article. Finally, writer says that if we really want to improve our economy, what the need is, we do not need smaller banks but more in number. ऐसा नहीं है कि हमें we do not need small and more number of banks, ये नहीं चाहिए. rather we need large alpha banks which may be less in number. चाहे कम banks हो लेकिन larger हो, rather being smaller many banks. okay, ठीक है, less number. okay, so this is being said over here and this is where we complete the first article. ठीक हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल, गुड आर्टिकल, एंड यू फाउंड आउट सम न्यू टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो. ठीक है, ओके, सो दिस इज देयर. नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली टॉकिंग अबाउट RCEP. इट सेज, ये इस आर्टिकल में राइटर बात करते हैं दैट इंडिया को क्यों करना चाहिए था ज्वाइन. ठीक है, बाय अच्छा, एके इन दैट केस वो गलती से होगा, बट ये वाला इज सही, जो मैंने बताया ना वो सही है. आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ही ऊपर होता है. ठीक है, योर मार्केट प्राइस, आप चाहे गूगल भी कर लो, मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू ही होता है. ठीक है, फॉर श्योर. ओके, तो अब यू गो बाय दिस. ठीक है,
नाउ आरसीईपी की बात हो रही है, इवन एलाइज यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए था, ऑल्दो इंडिया इज फोकसिंग ऑन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, बीइंग आत्मनिर्भर एंड मोर ऑन डोमेस्टिक सेक्टर, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सेक्टर इज मेनली द रीजन व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आरसीईपी। बट क्यों ज्वाइन करना चाहिए था, इस बारे में बात हो रही है आर्टिकल में। राइटर कह रहे हैं कि इंडिया शुड नॉट सी आरसीईपी एज अ चाइना लेड ग्रुपिंग, रादर इंडिया शुड सी it as ASEAN led grouping, ठीक है। ASEAN countries also do not see China as a threat and have been supportive of RCEP, ठीक है। तो इसमें क्या बातें होती हैं, that RCEP's principles and objectives allow individual countries to choose the scope and the product categories for the bilateral tariff। तो राइटर बता रहे हैं कि RCEP बहुत ही flexible cooperation है, ठीक है। इसमें you can choose on what product you want to have trade with when in terms of bilateral relations with the countries, ठीक है। तो bilateral relation के terms में आप products choose कर सकते हो, scope of trade, tariff, ये सब choose कर सकते हो under the ambit of RCEP, okay। over and above, इससे हट के writer ये बात कर रहे हैं that as the world is accepting that Asia is emerging as an economic bloc, an economic growth pole, right, तो इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, दे हैव बिकम अ लिटिल एप्रीहेंसिव, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए क्यों आगे है चाइना से भी या किसी भी कंट्री से क्यों आगे, बिकॉज यूएसए हैज अ ह्यूज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ओके। यूएसए हैज ह्यूज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विच चाइना इज इवन नॉट इवन एबल टू मैच टिल डेट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल नॉट बी एबल टू मैच चाइना, वन और द अदर डे चाइना विल मैच द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेवल ऑफ यूएसए, okay। So there's a need that India moves on a path of capacity building, moves on a path of advancement, moves on a path of more sophisticated technologies। ये राइटर कह रहे हैं, देखो, both India and China are breaking the monopoly of West means the Western European nations and your North America region, okay। So India and China are breaking the monopoly of West in wireless telecommunications, AI and other emerging टेक्नोलॉजीज। तो इन सब चीज़ों में इंडिया एंड चाइना आर मूविंग फर्दर, और इसकी वजह से यूएस कहीं ना कहीं डिलेमा में आ गया है, बिकॉज यूएस डेफिनेटली डज नॉट वांट टू लूज इट्स स्टेटस ऑफ द सुपर पावर और बीइंग द प्राइमरी पावर, राइट। सो डिलेमा ऑफ द वेस्ट इज दैट शेयरिंग पावर with these nations, especially the RCEP nations, will end its primacy in global affairs, okay, will end its primacy in global affairs। The dilemma of the US is more acute क्योंकि US अपनी पोजीशन भी मेंटेन करना चाहता है और US थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहता एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज अपने लोगों के लिए बचाना चाहता है, राइट। सो US इज more of in a confused state right now and more of in a protectionist state, ठीक है। तो with China having developed the capacity to bridge the technological gap, जिस अभी technological gap की हमने बात करी, so China has developed the capacity to bridge the technological gap and US weaponized interdependence by banning export of semiconductor। अभी जब trade war हुआ था, when there was a trade war between China and US, so US increased the tariff on गुड्स कमिंग फ्रॉम चाइना, बहुत ही ज़्यादा स्केल पे टैरिफ इंक्रीज कर दिया। जो सेमीकंडक्टर्स यूएस से चाइना जाते थे, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स विच यूएस गिव्स टू चाइना, उसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मेन आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स जो जाते थे चाइना पे उसको बैन कर दिया, सो दैट टू डिसरप्ट दी सप्लाई चेन ऑफ चाइना, क्योंकि यूएस का मेन गोल है कि उसकी जो सप्लाई चेन है चाइना की, जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको किसी ना किसी तरह से डिसरप्ट किया जा सके, ओके। But we know that China will be able to make it, if not today, in coming days or years, in China will be able to make such disruptive technology, ठीक है। तो इसलिए we cannot incline ourselves towards one country, okay, one thing that we cannot incline ourselves towards one country, and US also understands कि US को अब बाकी सबके साथ चलना पड़ेगा, okay। US cannot exercise power over the countries, whereas US has to exercise power with the countries, and which is already evident in Quad, हाँ। Quad में we can see कि US सबके साथ लेके सबकी बात सुन के चल रहा है, US बहुत ज़्यादा dominant नहीं हो रहा, although US wants that Quad should become a
military group or a security based cooperation, but US is exercising power with others, not over others. Okay, so what is the conclusion? What do we get of this article? We get to know of this article, इंडिया को बहुत ही क्लियरली समझ आ चुका है दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट रेडी टू ट्रांसफर दैट टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो अगर हम उनकी टेक्नोलॉजीज और उनके गुड्स और उनके एडवांस प्रोडक्ट्स के पीछे भागते रहेंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस. द नीड इज टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग, टू डू इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, to incentivize the domestic manufacturing sector so that time bound basis पे हम आत्मनिर्भर भारत के goals को achieve कर सके. And if we are really able to pace up our manufacturing sector and which we are really able to improve the capacity of our domestic sector, then probably down the lane we can really join RCEP. क्योंकि इसमें writer ये भी कह रहे हैं that still RCEP members are expressing their strong will to re-engage with India because they see India as a pole which can balance China factor. Okay, so अभी काफ़ी ज़रूरत है and this is the right time to invest in the manufacturing sector and bring disruptive technologies, more investment in research and development so that India can enter RCEP and can actually compete with the foreign companies. Finally, conclusion, India's isolation is not conducive to the aspiration of regional superpower. Thus, it should find a way to get into RCEP. Okay, this was about today's article. अच्छे articles थे, although these were more opinion-related article, not much that you can use in your answers. ठीक है, कभी-कभी आपको statistics मिल जाते हैं articles में which you can use in your answers, but sometimes you get articles which are more for opinion building. Okay, so this was about today's discussion. You can subscribe to Gradeup Super if you want to take up the courses for IAS 21 GS prelims comes mains course. It is available in English, Hindi both. What you will get under Gradeup Super, you will get courses and mock tests both for UPSC CSE and EPFO, right? Along with that, these are our star faculty members. Apart from that, you can take the Gradeup Super as per your requirement for 6 months, 12 months or 24 months. Okay, and these are the free classes that are available on the Gradeup app. Thank you so much for joining in. कल मिलते हैं guys at 2 p.m. Till then, I hope you found it informative. Please do not forget to like and share this session. Please like कर दो और share भी कर दो इस session को. Till then, have a great day. Bye bye.